Now friends, let's deal with this example in which we have to draw the free body diagram, then we have to write down the mechanical equations, differential equations, we have to find out the transfer function of it, and then we'll also be applying force voltage analogy, force current analogy, where you are very, you must be very intelligent to write down the equations of force voltage, force current analogy, but drawing that circuit is a bit tedious job, so we'll be focusing on drawing the circuit. Equations you can definitely write down by using that Bol-Marikadi Xerox fundamental, right? So now let's deal with it. Let's draw the free body diagram. So I'll be having mass. How to draw free body diagram? You have to keep your mass element over here, and then you have to apply all the forces on it. So we'll be having mass over here, and we'll apply the forces F of t, right? Input force, right? Or input to the system. And the mass will say no, so that's why it will generate a force which is md square x by dt square. It will generate another force which is like this, क्योंकि ये ऊपर पुश होगा तो ये ना बोलेगा, पता चला? ये ना बोलेगा ना, damper will say no. So I'll be having the force which is b dx by dt. ये ऊपर धक्का मारेगा तो स्प्रिंग बोलेगा नहीं, पता चला कि नहीं पता चला? So it will be having kx. So we have got a governing equation. We have got a governing equation right now, which is equal to f of t. It is equal to, people write it this way as well, mx double dot plus bx dot plus kx. It is very easy to write, Fine. पता चला कि नहीं? Which is one and the same. Clear हुआ? Okay. So capital F of s, which is equal to m s square capital X of s plus b s capital X of s plus k into capital X of s. So I'll be having capital X of s common. So f of s, which is equal to ms square plus bs plus. I have to write down y. It is given y over here. See, I cannot write down x. So it has to be y. तो सर x लिखे नहीं चलेगा, अरे वेरिएबल अलग भी है तो what can I do? बाकी मैथमेटिक्स तो सेम ही रहा है सबका. So it is y double dot and y. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Fine. So ms square into capital Y of s, bs into capital Y of s, and this is capital Y of s. So ms square plus bs plus k into capital Y of s. So I have got my transfer function. I have got my transfer function output upon input, which is equal to 1 divided by same ms square plus bs plus k. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? I am just understanding how to do mathematical modeling of it. Fine. Once it is done, in next chapter, which is time response, we will consider such things. तो तब आपको पता होना चाहिए कि आया कहाँ से? तो भाई previous chapter में से. Clear हुआ कि नहीं हुआ? पता चल रहा है ये चीज? Okay. So now let's deal with force voltage analogy. In which, in force voltage analogy, we understood एक force आया, एक voltage आया, तीन में divide हो गया. तो सीरीज सर्किट, तो एक वोल्टेज आया, तीन में डिवाइड हो गया, L, then this is R and this is C. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. ये पता चला कि नहीं पता चला? पता चला ये? हाँ? ओके, डन ना? फोर्स करंट एनालॉजी. सो फोर्स करंट में करंट आया, मेन करंट आया, तीन में डिवाइड हो गया, तो तीन में डिवाइड हो गया. पहला है C, दूसरा है G एंड 1/R और तीसरा है L. क्लियर हुआ? फाइन. इक्वेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा. आरएलसी में गया, अरे वो भी नहीं पता चला, तो ऐसा तो हो सकता है ना? तुझे पता है B मतलब क्या, तुझे पता है Y मतलब क्या, तुझे पता है M मतलब क्या, है ना? उतना तो याद है कि नहीं? ये तो पता है ना कि नहीं पता है? अभी पता है. गुड. चलो. So this is I of t and we can say this is C, this is 1/R and this is 1/L. हाँ? करंट इज पैरेलल होता है. अरे करंट ऐड कहाँ होता है? सीरीज में या पैरेलल में? हाँ, तो फिर करंट जहाँ जहाँ होगा वहाँ पैरेलल होगा कि नहीं होगा? फाइन. ओके. चलो. So we understood this particular example so well. Now let's deal with one more like that you people have to do. You people have to do at home. Otherwise, I'll do it for you. Come on. So the example is like this.
mass, this is b1, this is b2, this is k, and this is f of t. Fine, okay. So I'll be drawing the free body diagram of it. तो फ्री बॉडी डायग्राम में कैसा हो जाएगा कि यहाँ पे एक मास है जिसमें ऐसा इनपुट फोर्स है, तो फ्रिक्शन बोलेगा ना b1 dx, this is x of t, so dx by dt, मास ना बोलेगा m d square x by dt square, तो ऊपर आ रहा है ना पूरा, देख लो ना अंदर, है ना? ओके, यहाँ पे we'll be having this is kx and this is I'll be having b2 dx by dt. So I have got another equation, you know, f of t which is equal to, इन चारों में अगर कुछ गड़बड़ की, ये एरोस वाले ऐसे होंगे ना, फाइन, फोर्स इज लाइक दिस, फोर्स इज लाइक दिस, तो ये ना बोलेगा, ना बोलेगा, ना बोलेगा, मास भी ना बोलेगा, पता चला कि नहीं पता चला? So we can say f of t is equal to what? f of t is equal to m d square x by dt square plus b1 dx by dt plus b2 dx by dt plus kx, taking Laplace transform f of capital F of s, which is equal to ms square plus b1s plus b2s plus k into capital X of s. I hope it is clear to all of you. Fine, and I'll say that transfer function, it is x of s divided by f of s, which is equal to 1 divided by ms square plus b1 plus b2 into s plus k. फोर्स वोल्टेज एनालॉजी अगर ड्रॉ करनी है तो वोल्टेज दिया 1, 2, 3 और 4 में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ वोल्टेज, पता चला? फाइन, मुझे पता है वैल्यूज कैसे लिखनी है, तो पहले किस में गया? m में, तो m स्टैंड्स फॉर वोल्टेज के लिए L, तो पहले गया L में, पता चला? बाद में कौन है? v1 v2 है, तो v1 v2 के लिए r1 r2, so I'll be having r1, I'll be having r2, पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ? एंड देन थर्ड इज इन k, तो इज नथिंग बट 1 upon c, so I'll be having here 1 upon c, तो c में आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट चार्ज q, so this is v of t which represents by f of t. क्लियर हुआ? करंट ना बोलेंगे, तो करंट भी 4 में डिवाइड हुआ, तो एक मेन करंट आया, वो एक में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में डिवाइड हो गया, पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ? पता चला ना, 4 में करंट आया तो डिवाइड हो गया। सर इसकी हाँ, एग्जांपल कौन सा एग्जांपल? ये गुड मॉर्निंग नहीं सर, मींस अभी 4 नहीं है, लिमिट 1 फोर्स दिया which is मेन करंट, इसमें मास में गया, मास में गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। सर b1 b2 दो मींस कैसा है? b1 यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग सकता, लग सकता है, यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने रखा हुआ है, और नीचे भी फ्रिक्शन लगेगा। हाँ नीचे भी फ्रिक्शन लग रहा है, पता चला? तो वो गिवन फोर्स इज डिवाइडेड इनटू 4, सो गिवन वोल्टेज इज डिवाइडेड इनटू 4, सो केवीएल हो गया सीरीज सर्किट, गिवन करंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल सर्किट, पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, ओके। सो अगेन हाउ टू राइट डाउन, तो यहाँ पे C आएगा, या C कैपेसिटेंस विल बी देयर जस्ट बिकॉज़ इट इज फर्स्ट इज M, so M stands for C, then we have 2 b1 b2, so it is nothing but 1 upon r, so it is 1 upon r1, 1 upon r2, and here I'll be having L, 1 upon L. Clear हुआ कि नहीं हुआ? So got this as well, done, ठीक है, take a pick. पता चला ना बेटा आपको? ग्रेट, ये नीचे पूरा आ गया, फिर गया, ओपन आते होंगे ना, दूसरा कंडीशन है। ठीक ठीक, बोलना बहुत अच्छा बात ओके। Now let's deal with the next example. Everybody over here, everyone. मल्लयुद्ध नहीं कर रहे अपन, come on, here we can do systems. So let's deal with the next example. बेटा यहाँ f of t m1 m2 k1
K2 B1 B2. It's not given, not given. Pada? Okay. This is x1 of t. This is x2 of t. पता चला? Clear? Done? Fine? And we have to solve this. We have to find out the transfer function. We have to do force voltage. We have to do force current analogy for this. Clear हुआ? Fine. So we have to do all the things that we people have started. Equations you can write. I will show you the circuit. Fine? Okay? Of force voltage and force current analogy. Now let's draw the free body diagram. We will be taking two mass elements. Okay. One f of t is like this. Mass ना बोलेगा m1 d square x1 by dt square. पता चला कि नहीं पता चला? Fine. Okay. Fine. ये b1 भी ना बोलेगा b1 dx1 by dt. पता चला कि नहीं पता चला? Okay. Then k1 भी बोलेगा नहीं. K1 बोलेगा नहीं. पर ये ऐसे खींच रहा है तो यहाँ से वो बेचारा खींचवा भी जाएगा ना. पता चला? Fine. K1 बोलेगा ना, but when we are pulling it like this, तो यहाँ से it is going to pull that entire system as well. पता चला कि नहीं पता चला? Physically think that part. Now let's say when I am applying force over here, for the first time, say if it is moving 10 centimeters, then the motion of this entire system will be less than 10 centimeters. Will always be less than 10 centimeters. So in our system, as the force is exerted on mass m1, we can say that the displacement of m1 is more in comparison of displacement of m2. So we understood x1 is greater than x2. ये पता चला कि नहीं पता चला? Because my force is exerted on m1. Clear? उसका displacement dot of is ज़्यादा ही होने वाला है. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Now let's say, come on. This point of K1 spring or spring having spring constant K1, it is having displacement of what? H1. And this point of spring is having displacement of H2. ये पता चला कि नहीं पता चला? Fine. So spring इतनी है, इसको मैं 10 सेंटीमीटर खींचता हूँ और ये 7 सेंटीमीटर आगे आती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x1 minus x2, 3 centimeters. पता चला कि नहीं पता चला? So we can say that the spring will be having k1 into x. X is nothing but the net displacement, which is x1 minus x2. Minus x2. And why it is not x2 minus x1? That is clear to all of you. x1 is always greater in comparison of x2. If at all this force is exerted over here, so this x2 would be more in comparison of x1. पता चला ये? Great. Done. Okay. So now we understood this. Okay. Then after it is pulling it the mass m2. m2 क्या बोलेगा? Men. तो it is m2 d square x2 by dt square. यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है पर यहाँ पे फ्रिक्शन है b2 dx2 by dt and here I'll be having k2 into x2. पता चला कि नहीं पता चला? Clear हुआ ये? Done. आपने फोर्स डिस्कस किया ना f of हाँ तो k1 किस साइड से जाएगा? k1 पहले when I pull it, this spring will say no, but वो पूरी स्प्रिंग तो आगे ही आ जाएगी ना. अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा हूं तो इसके पीछे वाला भी रिस्टोरिंग फोर्स तो ऐसे आएगा ना. स्प्रिंग में फोर्स तो ऐसे जनरेट होगा ना दोनों साइड से. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Fine. Think it physically. The more physically you will be able to imagine, that entire fundamental will be very easy for you to understand. Fine. Okay. पता चला ये चीज? Great. So we understood this top node. दो नोड बन गए अपने पास और दोनों के दो इक्वेशंस बनेंगे. इसमें क्या क्या ट्रांसफर फंक्शन बनाना है? तो ये ट्रांसफर फंक्शन बनाना है. x1 of t, x2 of t by x1 of x2 of x upon x1 of s. x1 of s upon f of s and x2 of s upon f of s. ठीक है? This is what you will have to make, you will have to do. चलो तो कैसे करेंगे? तो पहले दो इक्वेशंस लिखते हैं. पहला इक्वेशन, so f of t which is equal to m1 d square x by dt square
plus b1 dx1 by dt plus k1 x1 minus x2. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ ये? ओके, तो लेट्स टेक लैपलेस ट्रांसफॉर्म दिस फंक्शन. सो कैपिटल f of s is equal to ms square, this is x1, ms square x1 of s plus b1 s x1 of s plus k1 x1 of s minus k1 x2 of s. पता चला कि नहीं पता चला? पता चला? Fine. So we have got our first equation. So I can say that I can reduce it further. So capital F of s, which is equal to ms square plus b1s m1s, so it is m1s square plus k1 into x1 of s minus k1 into x2 of s. So we have got our first equation. Pada in Laplace transform form. Now, what to do? We will deal with second equation. In second equation, ये फोर्स कितना है? k1 x1 minus x2 ना बोल रहे हैं, which is equal to m2 dx2 square by dt square plus b2 dx2 by dt plus k2 x2. Taking Laplace transform, so k1 x1 of s minus k1 x2 of s plus m2 is equal to m2 s square x2 of s plus b2 s x2 of s plus k2 x2 of s. Is it clear? Fine. Okay. Then after we can say that this is k1 x1 को यहाँ पे रखो, बाकी सारा उस साइड लेके जाओ. So I'll be having k1 x1 of s which is equal to m2 s square plus b2 s plus k2 plus k1 into x1 of s. Is it clear? Fine. ये पूरा उस साइड लेके गए, तो we have got this term. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? So we have got this fundamental. तो I have got my first thing. अच्छा, this is x2. x2 था ना उस साइड? अच्छा, I've got my this term. That is x2 of s divided by x1 of s, which is equal to what? x2 of s upon x1 of s, which is k1 divided by m2 s square plus b2s plus k1 plus k2. पता चला कि नहीं पता चला? Clear? Now, very simple. What you people have to do is, I've got equation f of s in terms of x1 and x2. अब मुझे I want this term x1 upon f of s. तो x1 है, f of s है. मुझे क्या प्रॉब्लम कर रहा है? x2 of s is problematic for me. It should not be there in the equation. So I can simply replace x2 of s with x1. That's k1 x1 of s upon this. So this entire value when put in the place of x2 of s, your x1 of s will come common and you have got first term. पता चला कि नहीं पता चला? Fine. Similarly, I hope you people are understanding this. Here f of s is in terms of x1 of s and x2 of s. If at all you are interested to calculate x1 of s upon f of s, you have to use this equation. You have x1 of s over here, you have capital F of s over here, but you don't want x2 of s. So you have got a relationship of x1 of s and x2 of s. So I can say that x2 of s is equal to k1 upon this into x1 of s. So x2 of s is replaced, this x2 of s can be replaced by x1 of s. So when you put it over here, this entire term will come in terms of x1 of s, x1 of s, x1 of s will come common and you can easily find out the transfer function. Is it clear to all of you? And similar case with the second term. How to do it? So x2 of s upon f of s you want. So again you have to use the same equation where you don't want this x1 of s. Where x1 of s can get replaced by x2 of s by this particular equation. This divided by k1 into x2 of s. That you put over here. x2 of s will come common and you can take that ratio. Is it clear? Fine. Okay. That you people have to do. Now the task is, you can also write down, force voltage equations. You have to replace that Bolmari-Kaiser. That's it. Fine. That's it. तो equations तो बन जाएंगे कि time domain में करना है. You're not supposed to find out the Laplace transform of those equations. You have to just write down time domain equations into it. Is it clear? So what we'll be doing is we'll be writing time domain equations for this, time domain equations for this. That's it. And then how to deal with the circuit. So in circuit, when you have two masses, you'll be having, for force voltage, you'll be having two loops. पता चला?
फोर्स वोल्टेज में 2 लूप होंगे, एक ही मास था, एक लूप आता था। फोर्स वोल्टेज नो केवीएल मतलब लूप, पता चला मैश एनालिसिस। सो व्हेन यू हैव 2 masses यू विल बी हैविंग 2 लूप्स लाइक दिस। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिसमें पहला फोर्स है तो वोल्टेज, फाइन। दिस फोर्स इज डिवाइडेड इनटू 1, 2 and 3। तो इसमें 1, 2 and 3 भी हो सकता है, और else we can say it like this 1, 2 or 3, fine। Which one is correct? That we have to figure it out, and why so? Achha, then whatever you have over here, voltage across K, so I'll say that this is M1, this is B1, this is K1, right? Okay, ठीक है? And here M1, B1, K1. So I guess और K1 में जो भी मिला वो M2, B2, K2 में गया, तो वापस M2, B2, K2, M2, B2, K2, बराबर है? M2, B2, K2 like that चलेगा, वो तो पूरा सीरीज ही है ना, so that's okay, fine। So in these two, which one is correct according to you, first or second? Second. Why? Because K is in between both of them, मतलब whatever voltage will come across K, it is nothing but the voltage across all three। पता चला? यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा इन तीनों के लिए सोर्स बन गया कि नहीं बन गया? पता चला कि नहीं पता चला? So the voltage across this is nothing but the source for all three which we have over here. So this is wrong. I hope you people have also understood this entire fundamental that we have learned over here, and it's very easy. It seems very difficult at first to know how we'll be able to draw the circuitry in electrical terminology, but it's very simple. Fine, it's really very simple if you understand the concept of it, and this is the power of concept. Fine, so let's have first. This is my first element, second element, then third element. Whatever the voltage we have got over here, it is divided into again 3. Clear हुआ कि नहीं हुआ? So this is the correct terminology. जिसमें क्या क्या रखना है? तो भाई M stands for L, B stands for R, K stands for C. Fine, and here again M stands for L. So this is L1, R1, C1. This is L2, R2 and C2. पता चला कि नहीं पता चला? This becomes your Q1, this becomes your Q2. Clear हुआ? Done. So this is force voltage analogy. This is force voltage analogy. Fine. Let's deal with force current analogy. In force current analogy, main current आया 1, 2 और 3 में डिवाइड हुआ। मेन करंट आया 1, 2 और 3 में डिवाइड हुआ, और इसका जो भी करंट था वो फर्दर 1, 2 और 3 को फीड कर रहा है। पता चला कि नहीं पता? तो आई कैन से दैट जैसे कि नोड में हमने लास्ट टाइम 3 लूप्स बनाए, आई मीन 3 ब्रांचेस थी अपने पास, तो यहाँ पे कैसा होगा? देखो, मेन करंट आया 1, 2 और 3 में डिवाइड हुआ। मेन आया 1, 2 और 3 में डिवाइड हुआ, और उसमें जो भी आया पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? एंड दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, 1, 2, 3। Some, you know, majority times people are not able to understand how it is happening, but I hope it is very clear for you all. Fine, including you, the people who are watching this video. Fine, you understood main current आ रहा है वो पहले कैपेसिटर में गया, बाद में we are having B मतलब resistor 1/R, बाद में it is K which is nothing but inductor। Fine, उससे से करंट जो गया वो वापस कैपेसिटर, resistor, inductor। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसका जो एक नेटवर्क जो बुक में दिया हुआ है, इट इज दिस नेटवर्क ओनली। फोर्स बाद में यहाँ पे पूरे एलिमेंट लिख देते हैं, आई विल शो यू इन द बुक। फाइन, जनरली दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। फाइन, but in book there is one more diagram that I'll show you how exactly you have to draw, which is nothing but force current analogy only। फोर्स करंट एनालॉजी का नेटवर्क बनाने का, जिसमें फोर्स की जगह करंट की जगह वोल्टेज लिखो, इसकी जगह मास लिखो, इसकी जगह डैम्पर लिखो, इसकी जगह स्प्रिंग लिखो, इसकी जगह वो ड्रॉ करोगे ना, मतलब वो नेटवर्क बन गया। पता चला? फाइन, ओके, दैट इज गिवन इन द बुक। एनी डाउट ऑन दिस? डन? ये राइट डाउन।